Now, as the suspense over Maharashtra government formation persists, sources say that the BJP is prepared to go solo in the state with the help of independent candidates. Top leaders in the party have indicated that the BJP is unwilling to take the first step towards reviving an alliance with the Shiv Sena. Now, according to sources within the party, BJP doesn't want Sena to bargain for any ministerial berth or for the Deputy Chief Minister's post. Deliberations continue in the party. Earlier today, Nitin Gadkari and Arun Jaitley also held meetings to discuss the Maharashtra dilemma. Kajal Iyer now joins us live from the Shiv Sena Bhavan in New Delhi, in Mumbai, in fact. Kajal, it does seem at this point in time that the BJP is actually actively exploring the option of going it alone, along with independents. What is the reaction that the Shiv Sena has to this? When we spoke to Shiv Sena leaders after the BJP had declared, in fact after Om Mathur had given this bite specifically in Delhi, that they are considering all options, even going independently, Shiv Sena leaders said that they are really not concerned about this and they will only react to anything once the BJP actually reaches out to them and asks them to react about any of these things. They are of the opinion that they did know that this day could arrive because when the number reached up to 120 during the day of the counting, they were of the opinion that it could very well be that the BJP will try to woo independents and smaller parties which have 1 or 2 MLAs in the state, and that they would try to go it alone. And after the NCP's so-called unconditional support was also offered, the Sena was a little skeptical about whether or not the BJP would approach it. The Sena did try to make the first attempt to go and speak out by Uddhav Thackeray giving a phone call to Amit Shah and various other leaders of the BJP, but there has been no response from the BJP so far. That is what Sena leaders are telling us. In fact, Sena leaders going so far as to say that Uddhav Thackeray has clearly told his MLAs that they are prepared to go as an opposition if it requires, and that the BJP has to make its own decision. In fact, even in the editorial in Samna today, they have said that it is an individual party decision whether or not the BJP will take the support of the NCP or not, and it is up to both the NCP and the BJP to decide what they want further. Kajal, do stay on with us as we play out reactions to the developments taking place, beginning first with Om Mathur. देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि बीजेपी बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई है और ये वर्डिक्ट महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी को दिया है और स्वाभाविक रूप से महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी को बड़ा भाई बनाया है। एनसीपी ऑलरेडी पहले कह चुकी है कि हम बाहर से समर्थन देंगे अच्छी सरकार बनाने के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए। तो उससे बात करना या नहीं करना, वो तो ऑलरेडी अपना प्रपोजल रख चुके हैं, सार्वजनिक कर चुके हैं। अब रहा सवाल शिवसेना का, तो शिवसेना जब भी बात करेगी, जैसे भी बात करेगी, अभी तक सारी वाया मीडिया या उनके अखबार के माध्यम से बातें आ रही है, क्या प्रपोजल है, क्या है। मुझे नहीं लगता किसी स्तर पे कोई बात हुई है। उद्धव जी ने रिजल्ट के बाद मेरे से बात की थी, उन्होंने बधाई दी है, मैंने उनकी बधाई स्वीकार की है, तो किसी प्रपोजल पर उनकी बात हुई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जब भी हम तय करेंगे, हमारे पास हाउस में बहुमत साबित करने जितनी संख्या हमारे पास है। कैसे है, क्या है, ये आपको हाउस के दिन पता लगेगा, लेकिन ऑलरेडी हमने हमारी कर चुकी है। अब हम सोचते हैं कि जो वर्षों तक हमारे साथ रहा, क्योंकि देखिए मैंने पहले दिन भी आपके ही चैनल पे कहा था कि गठबंधन टूटने का हमको कष्ट है। हम चाहते हैं कि अगर नेचुरल अलायंस जो हमारा था हमारे साथ आता है तो हमारे लिए प्रसन्नता होगी, नहीं आता है तो राजनीति में विकल्प सारे खुले रहते हैं। It's messy now. We don't know what's really happening. We hear newspaper reports. First of all, it's still not clear as to why Shiv Sena and BJP broke up. And if there were such irreconcilable differences that they broke up a 15-20-year-old alliance, I think it's also important that work is done on those differences. And unless core differences are resolved, will they really be able to run an efficient and a clean government? It's something we need to find out. But let's wait. They won the government between the BJP and the Shiv Sena. They have a strong mandate. We wish them all the best. Kajal, let's also play out a reaction we got from Ajit Pawar a day after he alleged that the Congress leader had approached the NCP to propose forming the government with the Sena. मजबूरी क्या,
मजबूरी कुछ भी नहीं है। अपने महाराष्ट्र में नया गवर्नमेंट आने के लिए स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए हंग जो असेंबली आई है उसमें कोई भी बारे में कोई सोचता नहीं, इसलिए पवार साहब हमारे पार्टी के लीडर प्रफुल्ल पटेल साहब जी ने कल मीडिया को बताया और हमारा जो भी स्टैंड है वो सबके सामने रखा है। ये दोनों कांग्रेस और शिवसेना के सम्मेलन की जो संभावना बनी थी उसकी पहल किसने की थी और उसको क्यों नकारा गया? नहीं, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी के एक लीडर ने मुझे फोन करके बताया था कि ऐसा हमारे लीडर का कहना है कि ऐसा करेंगे तो चलेगा क्या। मैंने कहा कि उसमें तो बहुत कम 145, 53, 146 टोटल फिगर आती है तीनों की पकड़ के 146 और ये स्टेबिलिटी तो उसमें नहीं रहती है, फिर गवर्नमेंट ठीक तरह से चला नहीं सकता है हमारा कहना।